Sorry, my mic was muted. Assalamu alaikum, how are you? So let's take a quick recap about what we did in the last class last week. We started motion of an object. Okay, it was the first part of our topic mechanics. And उसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी कि in this chapter we'll be learning about object that moves and it performs and it have certain physical quantities in whenever it performs a motion. ठीक है ना? So those physical quantities जो हमने discuss की थी वो हमारे पास है distance, the total length covered by any moving object. It's a scalar quantity, so irrespective of the direction of the movement of the object, um, the total length that an object covers is referred as the distance traveled by a moving object. Its length, so the unit is meters. उसके बाद हमने देखी थी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अ लेंथ बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट? सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एंड प्रैक्टिकली हम इसको डिफाइन करते हैं एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ अ मोशन, राइट? फिर हमने बात की थी दो तीन टू डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमने कहा था कि अ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो, whereas a displacement may have a negative sign in its value. The negative sign in displacement represents the opposite direction of travel. That if an object is traveling in opposite direction to its starting point or its reference point, so its displacement would be written with negative. And if an object starts and stops in a motion, starts and ends a motion at the same point, तो हम उसको ऐसा कहेंगे कि उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो. लेटर हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस की, स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड को हमने कहा कि इट इज द रेट एट विच द लेंथ और द डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड. ठीक है, because it has distance in it and speed requires no specific direction of travel, hence speed is a scalar quantity. जो फॉर्मूला हम लिखते हैं that is distance over time and इसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड. Same is the formula for velocity. Velocity is defined as the rate of change of displacement, मतलब can be written as speed with a specific direction. So velocity is a vector quantity and velocity का जो फॉर्मूला है that is v is equals to s over t. यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ी सी डिटेल बात की थी एंड क्यों की थी उसका रीजन आज के टॉपिक के अंदर हमें समझ में आएगा. चलिए जी, सो आई जस्ट स्टॉप्ड द लेक्चर. सो इस फॉर्मूला v इज इक्वल टू s ओवर t पे हमने डिटेल गुफ्तगू की थी एंड आई जस्ट सेड कि हमें आज समझ में आ जाएगा कि व्हाई टू मेंशन सच डिटेल्स फॉर दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू गेट इट फॉर द क्वेश्चंस कि हमने कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज करना है. तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन हम कहते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी of the moving object, the magnitude of the velocity remains constant, its direction is fixed, it does not turns anywhere, its acceleration zero, velocity में ना increase आ रहा है ना decrease आ रहा है, and the forces acting on it are balanced. ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का जिक्र आपके पास फोर्सेस तक चलेगा, इसलिए हमने एक्सेलरेशन के टर्म्स एंड फोर्सेस के टर्म्स के अंदर इसको डिफाइन किया था. हमने एक्सेलरेशन सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी को इन डिटेल डिस्कस किया था कि speed is always positive, whereas a velocity has a negative sign, may have a negative sign, and the negative sign in the velocity again represents the opposite direction of travel. If an object is moving in the upward direction, that's positive. Downward direction, that's negative, right? Average speed हमने discuss की थी. Average speed को हमने कहा था कि it's total distance covered in total time, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना भी टोटल टाइम लगा था जो भी, तो इसका टोटल डिस्टेंस था. एंड उसके बाद हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी रिगार्डिंग एक्सेलरेशन. हमने एक्सेलरेशन को कहा था कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सॉरी इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. के वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, whether it's increases or decreases, so at what rate is it's being increased or decreased, that is acceleration. तो हम इसको लिखते हैं v minus u upon t से v is the final velocity of the object, u is the initial velocity, t is the time of change in that velocity. Last जो हमने बात की थी that was
increase change in velocity का मतलब है could be increase in velocity, that's positive acceleration, and if there is a decrease in velocity, that's negative acceleration. यहाँ पर हम इसको रेफर करते हैं as deceleration. ठीक है, अब यहाँ से इसको रिकॉल करना बहुत जरूरी था. अब यहाँ से आगे बात बढ़ाएंगे कि इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, हम v इज इक्वल टू एस ओवर टी का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन केस हमारा ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग, तो इन दैट केस हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव थ्री मेन इक्वेशंस ऑफ मोशंस जिसकी डेरिवेशंस आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, in this syllabus, although they are derived from each other. So the equations of motion are, acha, I'm writing it by 1 2 3. Definitely there is no particular sequence of these equations of motion, just like laws ke motion, there is a sequence of laws ke first law, second law, third law, so there is no sequence in these equations. ठीक है, तो फिर भी we'll write it like we have an एक इक्वेशन है हमारे पास S is equals to ut plus half a into t square. Second equation of motion, it's v square minus u square is equals to 2as. And the third equation of motion is v is equals to u plus at. ठीक है, these are the three main important equations of motion. ठीक है, अब इसके अंदर हम टर्म्स इन्वॉल्व जो हैं वो लिख लेते हैं कि s क्या है, u क्या है, t क्या है. थोड़ा सा ऑब्वियस है बट स्टिल वील मेंशन देम. तो s यहाँ पे इज द डिस्प्लेसमेंट, and it is measured in meters. U is the initial speed या initial velocity कहना ज्यादा बेहतर है बिकॉज यहाँ पे सारी वेक्टर क्वांटिटीज है. इनिशियल वेलोसिटी measured in meter per second square, meter per second. V is the final velocity, again measured in meter per second, and A is the uniform acceleration. Uniform acceleration measured in meter per second square, and t is the time of this change measured in seconds. ठीक है, so these are the physical quantities that are listed in these equations, and now when to use which equation, that is the biggest challenge for a student to realize whenever there is a question in front of him. So हम इस चीज को ये रियलाइज करेंगे with definitely a lot of practice, लेकिन still if you see these equations, तो इन equations में आपको एक चीज नजर आएगी कि हर equation के अंदर कोई ना कोई एक physical quantity is not present. ठीक है, for example, if I talk about the first equation, so first equation does not have final velocity in it, right? The second equation does not have time in it, and the third equation does not have displacement in it. So whenever a situation is given to us where the final velocity is not given and neither required, and we are supposed to solve an motion without discussing the final velocity, so definitely I'll be using this formula because that's the only option left. Similarly, if there's a situation given to us where we are supposed to solve a motion where time is neither given nor required, there is no discussion of time, so we'll be solving that particular motion with the second equation, that is v square minus u square is equals to 2as.
Third equation has no displacement in it. So similarly, any situation that does not involve the calculation of displacement, neither it's required nor it's given. ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, and उसके बगैर काम हो जाएगा, तो we'll be using v equals to u plus at. Right now, before moving towards the calculation part of this topic of these equation, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि when are these physical quantity physical equation to be used, ये valid कब कब है, ठीक है ना? So these equations are valid for the equations of motion, इनको हम रेफर करते हैं the equation of motions are valid for conditions are पहली linear motion. Now, what does linear motion involves? Linear motion says a motion in one dimension only, either horizontal or vertical. Okay, could be a free fall, could be a car moving in a horizontal direction, accelerating or decelerating something. Again, it should be a linear motion. And second, and the most important one, uniform acceleration. अब द पॉइंट इज कि व्हाट डज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस, कि अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वी विल डिफाइन एज लीनियर इंक्रीज और डिक्रीज in velocity. Like when the velocity increases or decreases linearly. For example, अगर मैं कहूँ कि with respect to time के respect से the value of velocity was increasing, like for time t0, t1, 2, 3, 4, 5, different time instants के ऊपर 0th second, 1 second and 2 seconds. So let's say कि velocity in meter per second was recorded as 0, 5, 10, 15, 20, 25. So you see there is a linear gap in the increase of velocity. Similarly, if there is a linear gap in decrease of velocity, so it means the acceleration is uniform. ठीक है? So अगर हमारे पास there is a linear increase or decrease, so in that case only these equations of motion are to be used. ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने इस्तेमाल कैसे करना है? सॉरी, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किस तरह करना है, तो वो वी विल बी सीइंग दिस विद सर्टेन एग्जांपल्स, राइट? सो लेट्स से फर्स्ट example says a car accelerates from rest at a rate of 5 meters per second square. Find its final velocity after it has covered 200 meters.
ठीक है. Now the question says कि a car accelerates from rest. So rest over here means that the initial velocity of that car was zero at rest. At a rate of 5 meter per second square by the unit also we can identify the quantity के किस quantity का magnitude लिखा हुआ है. तो car accelerates at a rate of 5 meter per second. So this goes the acceleration over here. The question says find its final velocity. तो final velocity का मतलब है कि we are supposed to find out the v over here after the car has covered a distance of or displacement of 200 meters. ठीक है. So now among all the information required and given there is no time. ठीक है. Time की value ना given है ना मुझे required है. So the obvious choice from the equation of motion would be v square minus u square is equals to 2as. The best way to perform to answer it to start with writing the proper formula and then put the values in it. Since we know that the object started from rest, so initial velocity has to be zero. So this factor goes to zero, and we are only left with v square is equals to 2as. अच्छा v square हमें मालूम करना है तो we'll leave v square as it is and 2 we'll place the value of acceleration 5 and then it's 200 the displacement. ठीक है. So v की value हमारे पास आ जाएगी 2 into 5 is 10, 10 into 200 is 2000 and we'll place a root under it. ठीक है. रूट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि v पे आपके पास स्क्वायर था. ठीक है. By calculating this value we'll get by under rooting 2000 we'll get a value of 44.7. So the final velocity of this object after traveling 200 meters would be 44.7 meter per second. I hope it is clear. Let's move on towards the great. Let's move on towards the next question. Today we'll be covering we'll be doing a lot of questions. ठीक है ना. तो क्योंकि for these equations इसको पहले तो memorize होने के लिए and how to use these equations we'll be solving basic questions first. ठीक है. बहुत ही basic वाले questions हम लोग आज देखने होंगे. So another example says a car accelerates from rest and travels and travels 500 meters in say 10 seconds. Find the acceleration of the car. ठीक है. Acceleration मालूम करनी है कार की. So acceleration is unknown to us. We are supposed to find out the acceleration. The car again starts from rest. तो इसका मतलब ये है कि the initial velocity of the car is zero. The car travels for 500 meters. So distance is given this time and time is also given 10 seconds. The only thing that is not in the information and neither it is required is the final velocity. Okay. So looking up to the formulas, which of the formula do you think would be used? Which one of the formula could be used in solving this particular equation situation?
चले, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरह गिवन है कि उसने बोला रेस्ट से स्टार्ट किया था, टाइम हमें 10 सेकंड्स गिवन था, एक्सेलरेशन हमसे मांगी थी, फाइनल वेलोसिटी इज नीदर गिवन नor रिक्वायर्ड, सो द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच हैज नो uh no, we cannot use the normal formula for acceleration. Why? Because we do not have the final velocity, right? We do not have final velocity, neither is given nor required. So any equation that has no final velocity would be used. So among these equations of motion, do you think I can use the first equation of motion, that is S is equals to ut plus half at square, क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी है, यू भी है, टी भी है, ए भी है, बट वी नहीं है। तो अब मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? Again, since u is 0, the 0 multiplied by t would also be 0. So this factor goes to 0 entirely. Displacement was given 500 meters. I'm left with half. I am supposed to find out the value of acceleration, and the value of time is given 10, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है according to the formula. ठीक है? Now थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहा हूँ. 2 would be multiplied on the other side by 500, and ये 10 का square would become 100, and it would be divided by the value on the other side, तो ये हो जाएगा आपके पास 100, and the final answer of acceleration would be uh, 10 meter per second square, right? We'll be solving it like it goes like 10 meter per second square. ठीक है? चले, let's move on towards the another situation, and this time I would like you to solve it. And let's think of an example. An object moving with a velocity of 15 meter per second accelerates for 6 seconds accelerates for 6 seconds until its velocity is 90 meters per second. Calculate the acceleration. इस दफा आप इसको ट्राई कीजिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? तो गिव इट अ ट्राई. सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि हम इसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे.
Exactly. We can use the simple formula of the acceleration. And so what's the value of acceleration? 12.5 meter per second square. Exactly. 12.5 meters per second square. तो अच्छा एक चीज वन अमेजिंग तो नहीं बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस देखें द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन राइट देखें द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लिखी थी दैट वाज v इज इक्वल्स टू u प्लस at ठीक है एंड द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन अब ये किस तरह आया था देखें फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास है v माइनस u अपॉन t तो अगर इस फॉर्मूला से मैं v को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो आई लैंड अप विद द सेम इक्वेशन ऑफ मोशन तो द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लिखी थी दिस इज जस्ट अ रीफ्रेज्ड वर्जन ऑफ द फॉर्मूला जो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है सिमिलरली द अदर फॉर्मूलाज आर आल्सो ड्राइव्ड इन द सिमिलर पैटर्न यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशंस तो वो हमें जरूरत नहीं है तो हमने सिंपली इसको इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी 12.5 meters per second square ठीक है चलिए अब थोड़ा सा enhanced वर्जन का एक क्वेश्चन जो है वो मैं करवाना चाहूँ the question has a tricky situation तो अब आपने वो समझना है ठीक है the situation says that there is a train which moves on a track the track is of length x there is a yellow mark on the track like this and a red mark on the track over here ठीक है I hope अच्छा let's make this yellow mark as a green mark क्योंकि वो yellow वाला जो है वो नजर नहीं आ रहा तो there is a green mark ठीक है and then a red mark ठीक है और ट्रेन जो है the train it is actually traveling at a uniform speed ठीक है and it is supposed to apply brakes with a velocity u at the green mark. The train which is actually traveling with this velocity, if the train is coming with a velocity u at green mark, the green mark, the train applies brake. ठीक है अच्छा अप्लाइज ब्रेक का क्या मतलब है कि अगर मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो फ्रॉम दिस पॉइंट the train would start decelerating right and the distance of a red mark is calculated such that a train comes to rest at this point okay and this distance is given like it is given as x ठीक है distance कहा गया कि this distance is x सही है तो अब सिचुएशन को जरा समझिएगा
कि what the ideal situation is. Ideal situation says that कि train चलती हुई आ रही है, the train sees the green mark, and at the green mark train applies the brake. ठीक है ना, उससे पहले वाला मोशन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हम u से स्टार्ट करेंगे. At point u, now this becomes its initial velocity, right? u, यहां से वो डिसेलरेट करना शुरू करेगा यूनिफॉर्मली, and finally it would come to rest at point that is x distance apart, where the red mark is placed. ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपको दे रखी है. अब वो एक नई सिचुएशन लेकर के आता है कि वो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एंड a second situation says that कि अगर the train has its initial velocity 20% increased. ठीक है, मतलब अगर ट्रेन की स्पीड को हम 20% इंक्रीज कर देते हैं तो ऐसा होगा कि, और ब्रेकिंग को सेम रखते हैं, तो द ट्रेन विल स्टॉप एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन x. ठीक है, if I'm not changing the value of acceleration, ठीक है, and the velocity is increased by 20%. ठीक है, so I'll write it here like u dash, the new value of u, it is increased by 20%. So definitely अगर initial value is increased by 20%, so this value, ये जो आपके पास distance है, this would increase like to a certain value. अब वो हमें नहीं पता कितना होगा, राइट, ये वो कितना इंक्रीज हो रहा है. तो लेट्स से कि इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया d. ठीक है, द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिएगा. क्वेश्चन सेज कि अगर if u is increased by 20%, what would be the new distance between green and red mark in terms of x? Like you have to give your answer in terms of this value x, right? चले, अब these are situation जहां पर student body feels the most difficulties है. Why? क्योंकि कोई numerical value नहीं given. ठीक है ना, उसने सिर्फ इतना बोला कि initial value was u, final velocity has to be 0, then initial velocity को 20% increase कर दिया, final velocity is again 0, deceleration की value is it remains the same, the distance is increased, in terms of x कितना increase होना चाहिए, right? So I hope the situation is clear. Is the situation given in the question, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई है? आई होप इट्स क्लियर, ताकि फिर हम आगे सॉल्व करना शुरू करें. कि अगर हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू विदाउट यूजिंग द आंसर, विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल वैल्यूज, तो अब तो गौर से सुनिएगा. फॉर सच सिचुएशन, अच्छा चले, तो आप इसको कॉपी कर लें सो दैट रेफरेंस के लिए. आई नो द सिचुएशन इज वेरी ट्रिकी, जस्ट कॉपी इट डाउन. उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग इन लाइक 3 minutes are more than enough to copy, I guess. So I'll start back in 3 minutes. The solving.
चलिए जी, so let's start with solving this situation. देखें, the first situation is given to us to make a mathematical expression. ठीक है, तो according to the first situation, ठीक है, तो मैंने first situation के हिसाब से पहले solve करना है. So according to the first situation, we are given u, then we are given v, that is 0. हमें एक्सेलरेशन का जिक्र है और हमें डिस्टेंस का जिक्र है. हमें टाइम का जिक्र नहीं है इस पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर. सो द फॉर्मूला दैट वील बी यूजिंग इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/s. ठीक है, since final velocity has to be 0 because the train would come at rest finally, so final velocity goes like 0. So u square minus 2. I'll be writing a as negative a. The reason is the train is decelerating. So a deceleration is always a negative acceleration. And this minus and minus sign would just cancelled out. And the distance given to us is x actually. तो मैं यहाँ पे distance की जगह x रख दूंगा. I'll place x in terms of distance. So I'll make the subject of distance x over here, that would be u square upon 2a. मुझे कैसे पता चला कि मुझे डिस्टेंस को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है? बिकॉज इन द नेक्स्ट सिचुएशन आई हैव टू गिव एन आंसर इन टर्म्स ऑफ x. तो इसलिए मैंने यहाँ पे x का सब्जेक्ट बना लिया. दैट एक्चुअल वैल्यू ऑफ x is actually u square upon 2a. Right? Now, in the second situation, the u is now 20% increase. 20% increase का मतलब ये है कि u plus 0.2 u. ठीक है, this is 20% of u. 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू u की थी उसमें ही 0.2 ऐड कर दिया. तो अब जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 1.2 u. फाइनल वेलोसिटी इज अगेन 0, डिसेलेरेशन इज अगेन -a एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें निकालनी है. टाइम यहां पर भी नहीं चाहिए, तो आई विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला विद स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, तो आई एम सॉल्विंग on this side. V square minus u square 2a and s. This was the general formula. V square has to be 0 because again रुक जाना है उसने. अब u की जगह I'll be writing 1.2 u the whole square, right? And a की जगह I'll be writing the same value because the situation is given कि हमें acceleration को change नहीं करना. And d is the new distance, the increased distance, that is d. ठीक है, u and minus and minus would cancel out each other. Now this square is on 1.2 and u as well. So opening of the bracket will result in 1.2 का square, that is 1.44 u square 2ad. Since I am supposed to find out the new distance, so I'll be making d as a subject of this equation. So d would be written as 1.44 u square upon 2a. अब यहां से I'll relate this to the first situation. U square upon 2a को मैंने कहा था कि it is equals to the value of x.
So I can just simply replace this u square upon 2a by the value x. So finally, by replacing this, I get that d, the new distance, is 1.44 times the previous distance, that was x. I hope the solution is clear. Is the solution and the answer clear to you? I know it was a bit tricky, bit longer one. Christina, I'm waiting for the answer. Is the solution to this question clear to you? चलिए जी, I'll be moving on then. ठीक है. Acha, we have multiple more such questions to be solved, but the next step towards these equations of motion is to study motion under the gravity. Okay? But since we have not much time left to start a new topic, so I'll be leaving this lecture over here. Okay? And because we have to start a new subtopic that relates equations of motion with the motion under the gravity. So we'll start the next lecture, that's on Wednesday. Actually, today was Wednesday. Achha. Okay. So we'll be continuing this topic on the next class on Monday. But meanwhile, I'll be sending you some practice questions relating these equations of motion and simple equations that we did in the last class that we reviewed today. सो दैट आपका एक छोटा सा रिव्यू सेशन हो जाए और आपको जो है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी एंड फिर इसकी कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ठीक है सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे देन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज